coming to the professional aspect. Personal aspect हम लोगों ने समझा, now professionally. Professionally speaking, Mokshpat is something like tarot, but a deeper version of tarot. However, tarot experts, जितने यहाँ बैठे मेरे alumni, they will talk more about how you can how is tarot and Mokshpat different and how can you combine them together, how they complement each other rather than contradicting each other. First of all, चाहे वो tarot हो, astrology हो, numerology हो, Mokshpat हो, runes हो, कुछ भी हो, they all talk about our spiritual growth. They talk about how to move forward in life. Mokshpat talks about the soul's journey, energies. It will not tell you दुनिया में बाहर जाके देखो क्या हो रहा है. It will tell you दुनिया में बाहर क्या हो रहा है पसंद नहीं आता तो आप अंदर जाओ. See where you are stuck. Why are you attracting it? Law of attraction. You attract whatever is within. जो भी आप वाइब्रेट करते हो अंदर से, आप उसी का इक्वल रेजोनेटिंग एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, राइट? दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? सो अगर आपको बाहर की जिंदगी पसंद नहीं तो अंदर की जिंदगी चेंज करो. नाउ फ्रॉम दैट स्पेस Mokshpat has a better depth because it is talking about energy and a very clear cut thing कि ये एनर्जी रोक रही है, एलिमिनेशन रोक रहा है. एलिमिनेशन रोक रहा है मतलब वो चीजें आप नहीं छोड़ पा रहे हो जो आपके लिए यूजफुल नहीं है. आप क्वेश्चन अगर आपका बिजनेस रिलेटेड है तो बिजनेस में आप क्या ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो, यू विल पुट इट देयर. अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप में है तो मे बी आप अपनी जजमेंट ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो, आप अपना गुस्सा ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो. So it's quite precise when it comes to the understanding of each box and what you need to do with it. Because here we are not talking about generalistic point of views. Here we are talking about specific energies in relation to specific areas of your life, which will become more clear when we'll do the reading. I'll do a one question answer reading for a few of you. आज कम है तो आराम से हो भी जाएगी. सेकेंडली मोक्षपाठ में दो चीजें जो कहीं और जल्दी से नहीं आप निकाल पाते इज द सोल्स जर्नी इन दिस लाइफ टाइम. Those who had joined in yesterday had gotten their soul journey created by the readers present. Soul journey is the journey of your soul from the birth till whatever age we want to take it off, because the soul never dies. तो हम डेथ हमारे पास होता ही नहीं है. यहाँ पे हम जिस पॉइंट से मरेंगे हम उसी एनर्जी से नेक्स्ट लाइफ टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट अपना लेकर आएंगे. वी विल टेक बर्थ फ्रॉम दैट सेम एनर्जी. दैट विल बी अ प्रीडोमिनेंट स्पेस ऑफ एनर्जी इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम. दिस इज द बिलीफ सिस्टम. सो सोल जर्नी इज अ कंप्लीट मैप ऑफ द लेसन्स यू हैव लर्न्ड karmically, life lessons, and what you still need to learn in the upcoming phases. Just because you're a very very evolved person doesn't mean कि आपका फ्यूचर उतना ही इवॉल्व जाएगा. कई बार वो लड़खड़ाता है, वो लड़खड़ाएगा. Where will you go wrong and how to rectify it? The biggest plus point about Mokshpat readings, which I consider as a plus point personally, Mokshpat ये नहीं कहता कि ऐसा होगा तो हो गया. This is it. Mokshpat will give you solutions. It will tell you this is stopping you, work on this energy, work on this, work on this, work on this. You can take out as many number of facets of the problem that you want and you can integrate it into your life. And second thing which I personally really enjoy about Mokshpat is the fact that Mokshpat आपको बड़ी बड़ी पूजा पाठ stones नहीं बताता. Mokshpat gives you small remedies, small things which are connected to you. If it talks about charity and daan, it doesn't talk about going and distributing things. It talks about distributing your energy, going and donating time in an orphanage, in an old age house, being a part of introducing your energy into that aspect or that remedy. It doesn't talk about what you can't do. It talks about you in your position, whatever can be done is to be done. So it's more practical.